With leaders from across party lines, opposition leaders, former prime ministers and the current leadership including Prime Minister Pushp Kamal Dahal, better known as Prachand. Jaishankar did not go empty-handed. He took some gifts to Kathmandu, like a hydropower deal. तो यहाँ पे नेपाल से एक इम्पोर्टेंट खबर आ रही है कि जयशंकर ने नेपाल विजिट किया है। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है और उन्होंने एक बड़ा मुआहदा साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ टाइम पहले, कुछ वीडियोस पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि नेपाल ने इंडिया को 6 ट्रिलियन की इलेक्ट्रिसिटी सेल की है। अब बात ये आ रही है कि नेपाल के साथ जो है वो इंडिया ने एक और साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये बड़ा पावर पैक्ट है। तो अब ये बात की जा रही है कि चाइना भी नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी लेने वाला है और इंडिया भी। तो अब ये देखा जा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा और किसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम पे इसके ऊपर बात कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रही है कि नेपाल जो है वो अब 2 की जगह 3 ममालिकों को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल करने वाला है। बांग्लादेश और इंडिया को पहले इनके साथ साइन हो चुके हैं, चाइना को इलेक्ट्रिसिटी सेल करने वाला है। तो चलिए रिपोर्ट शेयर करते हैं आपके साथ कि नेपाल किन किन ममालिकों को कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है। चलिए वीडियो देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। Now let's talk about Nepal. India's External Affairs Minister is visiting the country. He had a packed schedule. Jaishankar reached Kathmandu yesterday. He held multiple meetings with leaders from across party lines, opposition leaders, former prime ministers and the current leadership including Prime Minister Pushp Kamal Dahal, better known as Prachand. Jaishankar did not go empty-handed. He took some gifts to Kathmandu, like a hydropower deal. India will buy more power from Nepal, some 10,000 megawatts over 10 years. It's a lucrative pact for Nepal. They can generate substantial hydropower because they have access to some 6,000 rivers. But their full potential remains untapped. So how much hydropower does Nepal generate today? Less than 3,000 megawatts. And what is the potential? About 42,000 megawatts. Then why can't Nepal generate more power? Well, 2 reasons: lack of funds and know-how. And now India is stepping up to help. It will buy electricity from Nepal and invest in the power generation sector. India is helping Nepal build more plants. The specifics are still being finalized, but when the plants are ready, they will generate 8,250 megawatts of power. And what's the value of these investments? Billions of dollars, going by one report. During this visit, 3 cross-border transmission lines were also inaugurated. Kathmandu welcomed the agreement. Before this, India had just a short-term trading deal with them. Nepal wanted a long-term commitment. And the pact was being discussed since last year. Now both sides have finally signed it. The Nepalese Prime Minister has called it a milestone and a quantum leap for Nepal. And this was not the only deal they signed. The others cover areas like renewable energy, development projects and space. That's right, Nepal is building a satellite. It's called Munal. India will help them with the launch. And all this was discussed yesterday. Today was day 2 of the visit. Minister Jaishankar made more announcements. He will extend a new financial package to Nepal to be used for reconstruction efforts. Last year, an earthquake rocked western Nepal. India will help rebuild infrastructure there. The package is worth $75 million. So overall, it was a productive trip. It strengthens India's relationship with Nepal and also sends a message to China. What kind of message? First, India enjoys cross-party support in Nepal. Kathmandu's political landscape is famously unstable. Leaders switch allegiances abruptly and prime ministers change at the drop of a hat. I'll give you an example. Since 2008, no government has managed to complete a full term in Nepal, not a single one. But engagement with India remains a consistent priority for all leaders and parties. During his visit, Minister Jaishankar met with all political stakeholders from across factions, and this underscores India's importance in Nepal's power circles. The second important takeaway is this: both India and Nepal are working together despite their differences. And there are differences. There's been friction in the past, broadly because of 2 issues. The first is the boundary issue and the status of 3 disputed territories, Kalapani, Lipu Lake and Limpi Yadura, disputed between India and Nepal. The second issue is India's changes to military recruitment and the impact it's had on Gurkha soldiers from Nepal. In the past, they could join the Indian army, but recently India introduced what is called the Agnipath scheme. It's basically changed the rules for recruitment, and this has affected the Gurkhas.
These issues still remain unresolved, but recent engagements have shown that both sides are willing to look beyond them, to focus on mutual benefits and maintain a positive trajectory in the relationship. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर इस टाइम पे नेपाल के अंदर मौजूद है। नेपाल का विजिट किया है, साल का पहला दौरा उन्होंने नेपाल किया है और नेपाल के अंदर उन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बात की थी। अभी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि नेपाल इस टाइम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल कर रहा है। ना कि सिर्फ इंडिया को सेल कर रहा है बल्कि वो दूसरे ममालिकों को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है और सेल करने की बात कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश और चाइना आता है। अगर नेपाल इन दोनों ममालिकों को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा तो नेपाल जो अभी 6 ट्रिलियन की इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को सेल कर रहे हैं तो वो हो सकता है 16 ट्रिलियन या 60 ट्रिलियन तक भी जाके पहुंच सकता है। ये आंकड़े जो है वो आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नेपाल इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं इंडिया को 6 ट्रिलियन की, साल के अंदर 6 ट्रिलियन की इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहे हैं नेपाल इंडिया को। उसमें बांग्लादेश का अगर मुआहदा जो कंप्लीट हो जाता है, अभी इसके ऊपर बात की जा रही है, अगर वो मुआहदा कंप्लीट हो जाए या चाइना वाला मुआहदा कंप्लीट हो जाए तो ये नंबर्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। वो मैं इसलिए बात करूंगी नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि नेपाल चाहता है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले आ जाए। अब नेपाल ये बेहतरी इसलिए भी चाहता है क्योंकि नेपाल इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर चाहता है, साथ में चाइना के साथ भी ताल्लुकात बेहतर चाहता है। इंडिया ये कह रहा है कि नेपाल के अंदर बेहतर हालात तभी होंगे जब नेपाल चाइना के खिलाफ बात करेगा, ये बात की जा रही है। अभी जयशंकर नेपाल आए हैं, उन्होंने कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की है, साइन किए हैं। ये मुआहदों वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा कि कौन कौन से मुआहदे साइन हुए हैं, किन किन मुआहदों के ऊपर बात की गई है और नेपाल को कितना फायदा होने वाला है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता कि इंडिया और चाइना जो है ना दोनों नेपाल के अंदर इस टाइम पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक इस मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात या दूसरे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करें। नेपाल चाइना के बीच में भी काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इंडिया नेपाल के बीच में भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।